normal life and economic activities in the entire region are visibly affected and in some cases have come to a halt. In express, Honorable Chairman Sir, while any development that negatively impacts peace and security in the world is deeply troubling, this ongoing conflict is an issue of particular concern for India. We are a neighboring region and understandably have obvious stakes that West Asia remains stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study or for employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Chairman Sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for almost $200 billion annually. The House is also aware that in the last decade, there has been significant investment from the region into the Indian economy. Therefore, serious supply chain disruptions and climate of instability that we perceive are serious issues. Furthermore, these include attacks on merchant shipping, where Indian nationals often constitute a large proportion of the crews. We have sadly already lost 2 Indian mariners and 1 remains missing in such incidents. I know that the House joins me in condoning that loss. Honorable Chairman Sir, Government has been assessing the situation in West Asia continuously since the 12-day war in June 2025. We noted the indications of growing tension and cautioned the Indian community in Iran accordingly. On 5 January 2026, Indian nationals were advised by the Ministry of External Affairs to avoid non-essential travel to Iran. Those already resident there were urged to register with the embassy, exercise due caution, and monitor the embassy website and social media handles. A second advisory was issued on 14 January, reiterating this advice to avoid travel in even stronger terms. The Directorate General of Shipping, Mumbai, in parallel, issued its own advisory on 14 January for Indian seafarers, asking them to follow embassy advisories and avoid unnecessary movement ashore. Recruitment and shipping companies were asked not to deploy or send Indian seafarers to Iran. Sir, reflecting our assessment of the evolving situation, the Indian Embassy in Tehran issued another advisory on 14 February, urging Indian nationals, including students, pilgrims, business persons and tourists, to leave Iran by all available means of transport, including commercial flights. They were asked to contact the embassy for any assistance and provided with 24/7 helplines. This was again reiterated in strong terms through another advisory on 23 February. Some heeded these advisories and have left the country. However, many others have disregarded them and remain in Iran. We are also in touch with our fishermen who operate out of Iran. This was the situation till 28 February 2020. Once the conflict commenced, the Indian Embassy has facilitated the relocation of several Indian students in Tehran to places outside Tehran. An advisory update with emergency contact helplines was issued on 3 March. Similarly, facilitation was extended to pilgrims for their internal movement. Indian nationals who were in Iran for business reasons were assisted to cross over to Armenia and return home. The embassy in Tehran remains fully operational, in fact, on the highest alert. They are totally committed to supporting the Indian community in this difficult moment and in assisting Indian nationals who may wish to cross international borders.
Where seafarers are concerned, the Directorate General of Shipping, through an order of 2nd March, has constituted a quick response team for immediate response, coordination, and support functions. This team will function on a 24/7 basis. Honorable Chairman, sir, I would like to inform the House through you that every Indian embassy in the region has similarly issued advisories. The embassy in Israel did so on 20th February and 1 March, UAE on 20th February and 5 March, Bahrain on 20th February, Qatar on 20th February, Kuwait on 20th February and 5th March, and Saudi Arabia on 20th February and 8th March, Oman on 20th February, Iraq on 20th February and 5th March. MES has set up a dedicated special control room to monitor the situation and respond to queries from I will come back to let him complete his statement. Let him complete his statement. You are not allowing him to make the statement. That is not correct. Galgaji, that is not correct. I allowed you to speak. Let him complete the statement. I will come back to you. Let him complete the statement. Please. The MES latest update on this was issued on 7th of March. Honorable Chairman, sir, our diplomats have also worked hard to assist stranded transit passengers in hubs like Dubai, Doha, and Abu Dhabi. They have facilitated international border crossings for Indian nationals, including from UAE to Oman and from Qatar, Kuwait, and Bahrain to Saudi Arabia. Wherever there has been a partial opening of airspace, we have approved and undertaken commercial flights, including non-scheduled flights, to enable the return of Indian passengers. Our estimate is that as of yesterday, almost 67,000 of our nationals have done so. Sir, I also saw, today I was informed of a handout information put out by the Ministry of Civil Aviation, and this tells us of the efforts government is making. Yesterday, there were 15 inbound flights operated by Indian carriers which arrived in India. On the 7th. On the 8th, there were 49 flights, and on the 9th, there are 50 flights. So I want to assure the House that every effort is being made, that those who are stuck in the region, those who are transit passengers who are there, those who need to come back urgently from this region, we are making every effort for them to do so. Chairman, sir, throughout this period, government maintained close contact with relevant countries. Honorable Prime Minister himself has spoken to the President of UAE, the Amir of Qatar, the Crown Prince of Saudi Arabia, the Crown Prince of Kuwait, the King of Bahrain, the Sultan of Oman, the King of Jordan, and the Prime Minister of Israel. In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community would be a priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 20th February and 5 March 2026. We will continue these high-level conversations in the coming days. So, the House will also be interested in the issue of an Iranian vessel that is currently docked in Kochi. The Iranian side had requested permission on 28th February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1 March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this human gesture. Honorable Chairman, sir, in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully, taking into account availability, costs, and risks of the energy markets. For us, the interests of the Indian consumer
has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. Honorable Chairman, sir, let me conclude by highlighting the three guiding factors of our approach. One, India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. Two, the well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And three, our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I'm confident, sir, that the government has the full support of this august House on this matter. I thank you. Now, Honorable Leader of the House. आदरणीय सभापति जी, बहुत तफसील में विदेश मंत्री जी ने वर्तमान परिस्थिति मिडिल ईस्ट में उसके बारे में इन्होंने जो वक्तव्य दिया है और सरकार की मंशा और सरकार ने किस तरीके से इस क्राइसिस में अपने आप को आगे इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया है, इसको बहुत तफसील से बहुत डिटेल में माननीय मंत्री जी ने रखा है। जो ऑपोजिशन की तरफ से एनर्जी के बारे में भी प्रश्न था, उसका भी उन्होंने उस पर प्रकाश डाला है और बताया है कि सरकार किस तरीके से सारी चीज़ों पर सजग भी है, एक्टिव भी है, एड्रेस भी कर रही है और उन सभी समस्याओं के साथ आगे बढ़ करके भारत की जनता को और भारत की आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने 176 के तहत बोलने का मौका दिया। उन्होंने सब्जेक्ट छोड़ करके मैटर पर शुरू कर दिया चर्चा करना। उनको यह मालूम है और था कि विदेश मंत्री जी ने विस्तृत रूप से इन सारी चीजों की चर्चा करनी है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से सारी चीजों को डिटेल में रखना शुरू किया और आपने रूलिंग दी कि आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस मैटर, आई विल गिव अ थॉट और इस पर डिस्कशन के लिए करेंगे। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है, हुलिगनिज्म है। और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं इस हाउस में इनका रोल क्या है। इन्होंने बहुत हल्ला किया एसआईआर के बारे में। आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा का मौका दिया। 9 और 10 दिसंबर 2025 को चर्चा हुई। लगभग 16 घंटे 18 घंटे चर्चा चली और दुख की बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इस सारी चर्चा में यह है वॉकआउट कर गए जब हमारे तरफ से जवाब देने की बारी है। उसी तरीके से जब स्पेशल डिस्कशन रिगार्डिंग द इंडियाज एस्ट्रोनॉट अब्रॉड इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड क्रिटिकल रोल ऑफ द स्पेस प्रोग्राम विकसित भारत 2047 पर चर्चा हो रही थी 18 अगस्त 2025 को, तो ऑपोजिशन ने इस चर्चा में भाग लेने से अपने आप को अलग रखा। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि इनका रिकॉर्ड आपको सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने बहुत हल्ला किया, ऑपरेशन सिंदूर, जरा चर्चा करो, पहलगाम का अटैक। 16 घंटे डिबेट चली और जब गृह मंत्री जी ने जवाब देने की बारी आई तो यह विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। यह इनका रिकॉर्ड है, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। उसी तरीके से वक्फ बिल पर जब जेपीसी की रिपोर्ट यहां रखी गई तो उस समय भी यह इन्होंने लोकसभा में वॉकआउट किया। यानी कोई भी जो भी देश के इंटरेस्ट में काम होता है उसमें इनका 2025 के बजट के बाद, डिबेट के बाद जब निर्मला जी खड़ी हुई तब भी इन्होंने वॉकआउट किया और इस समय भी 2026-27 के बजट पर जब निर्मला जी खड़ी हुई इन्होंने सबको सुना
और जब जवाब देने की बारी आई तो ऑपोजिशन वॉकआउट करके चला गया। ये इनका कच्चा चिट्ठा है, इसको हमको याद रखना चाहिए। इनका कोई इंटरेस्ट देश में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट भारत के लोगों के विकास में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट विकसित भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट आत्मनिर्भर भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट देश आगे बढ़े इसमें नहीं है। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा। वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, ये ध्यान में रखिए। Now matters rise with permission. Srimati Rekha Sharma ji. Thank you, Honorable Chairman, sir, for letting me speak on this important issue regarding train number 09639/09640 Madar Ajmer Rohtak Special, presently operated as special service between Rajasthan and Haryana. This train provides crucial direct rail connectivity between Ajmer in Rajasthan and key districts in Haryana, including Rewari, Narnaul, Jhajjar and Rohtak. It is extensively used by daily commuters like students, employees, traders and pilgrims traveling to prominent religious destinations in Rajasthan. However, sir, due to its operation under special category, passengers face uncertainty regarding its long-term continuity and reservation facility remains limited. In the absence of permanent daily service on this route, passengers are often compelled to change multiple trains, leading to increased travel time, inconvenience, and financial burden. The consistent demand, high occupancy levels, and strategic interstate importance clearly justify the conversion of this service into permanent daily train. Therefore, I urge the government to permanently convert train number 09639/09640 into daily intercity superfast express with suitable LHB rake composition, ensuring adequate general second sitting, sleeper and AC chair car coaches to meet passenger demand. This step will significantly strengthen regional connectivity between Haryana and Rajasthan, facilitate educational, commercial and religious travel and enhance railway revenue. I request Honorable Minister of Railways to take immediate and favorable action in this matter. Thank you, sir. Shriman Ram Lal Suman ji. Shriman Ashok Rao Sangar Rao Chauhan ji. आदरणीय सभापति महोदय जी, नांदेड़ और लातूर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण शहर हैं। ये शहर मराठवाड़ा के साथ साथ कर्नाटक और तेलंगाना के कई जिलों के लिए कृषि, शिक्षा और व्यापार के बड़े केंद्र हैं। लेकिन इन दोनों शहरों के बीच अभी तक सीधी रेल मार्ग नहीं है। अभी नांदेड़ से लातूर जाने के लिए ट्रेन परभनी परली के रास्ते से जाती है। इस मार्ग की दूरी लगभग 212 किलोमीटर है और यात्रा में करीब 6 घंटे लगते हैं, जबकि नांदेड़ और लातूर के बीच सड़क मार्ग अगर जाएंगे तो लगभग 144 किलोमीटर है। इसलिए इस मार्ग पर अधिकतर यात्री और माल परिवहन सड़क से ही होता है। इसी कारण नांदेड़ और लातूर के बीच सीधी रेल लाइन बनाना बहुत जरूरी है। इस संबंध में प्राथमिक अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों शहरों के बीच नई रेल लाइन की लंबाई लगभग 104 किलोमीटर होगी और यह दूरी लगभग 1.25 घंटे तक में तय की जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना के खर्च में हिस्सा मतलब 50% कंट्रीब्यूशन देने का फैसला पहले से कर लिया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया है और इस परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे भी हाल में पूरा हो गया है। अगर केंद्र सरकार इस रेल लाइन के मंजूरी देती है तो इससे केवल नांदेड़ और लातूर के बीच ही नहीं दूरी कम हो जाएगी, बल्कि महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ इन तीनों क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क भी बेहतर होगा। यह एक महत्वपूर्ण मिसिंग लिंक है। इससे नागपुर और मीरठ जैसे बड़े जंक्शन के बीच की दूरी लगभग 991 किलोमीटर से घटकर
करीब 807 किलोमीटर रह जाएगी, यानी कि लगभग 184 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस रेल लाइन के बनने से विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बिलासपुर और जबलपुर जैसे शहरों को पश्चिमी तट की ओर जाने के लिए छोटा और सुविधाजनक रेल मार्ग मिलेगा। इसलिए मेरे केंद्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए। धन्यवाद। श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल जी, डॉक्टर मेहता विश्राम कुलकर्णी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इस शून्यकाल के माध्यम से देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की समस्या की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में 2024 में 1,80,000 से भी ज्यादा लोगों की सड़क दुर्घटना की वजह से मृत्यु हुई है। महाराष्ट्र में 2024 में 36,000 सड़क दुर्घटनाओं में 15,400 लोगों की मृत्यु हुई। पुणे में पुणे पुलिसों के आंकड़ों के अनुसार 1404 सड़क दुर्घटना में 320 लोगों की मृत्यु हुई और 1320 लोग घायल हुए। यह स्थिति जो है ये स्पष्टता से गंभीरता दर्शाती है। इन रोड एक्सीडेंट्स में 60% पीड़ित या बाधित 18 से 34 साल की आयु के हैं, जो देश की सबसे उत्पादक और ऊर्जावान आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। सड़क दुर्घटना की मृत्यु के कारणों में तेज गति, लापरवाही, नशे में गाड़ी चलाना, ट्रांसपोर्ट के बड़े व्हीकल्स की 15 साल की आयु खत्म होने के बाद भी वो गाड़ियां सड़क में उपयोग में लाना, ऐसे कई कारणों के साथ ही नए ट्रेंड में रील चलाना और फोटोशूट करना जिससे ध्यान भंग हो जाता है, ऐसे भी कारणों का समावेश है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत नशे में वाहन चलाना लापरवाही और दंडनीय अपराध है। तथापि अनेक घटनाओं में नियम का अनुपालन न करने के बावजूद भी आसानी से अपराधी छूट जाते हैं। सड़क पर नशे में गाड़ी चलाने का अपराध माना गया है, लेकिन दारू की दुकान महामार्गों के नजदीक आधे किलोमीटर पर उनको परमिशन दी जाती है, तो इससे संभावना और भी बढ़ जाती है। स्कूल और कॉलेजों में बच्चों के लिए निर्धारित आयु से पहले गाड़ी चलाने की अनुमति दी जाती है। पुणे में पोर्शे कार एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। जिससे कम उम्र की आयु के बच्चे